We will start the question number 3 of 5.2. If 6th term and 7th term of an AP are 19 and 41, that means 6th term of AP is 19 and 17th term of AP is 41, then find the 40th term. So 6th term of AP is 19. So our sixth term is A plus 5D is equal to 19. जब भी जो भी टर्म पूछी जाती है तो उससे एक कम डी होता है. So A plus 5D is 19 and 17th term यानी 17वां पद of AP is 41. So A plus 16D is equal to 41. Equation number 2. We will use here elimination method to solve the equation number 1 and equation number 2. समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने के लिए, ए और डी का मान प्राप्त करने के लिए हम यहां पर विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस माइनस, घटाने पर बाय सब्ट्रैक्शन कैंसिल, माइनस 16D प्लस 5D माइनस 16D 5D माइनस 11D प्लस माइनस माइनस 22 minus 22. So our D is minus 22 upon minus 11. Minus minus cancel 2. So the value of D is equal to 2. Common difference is 2. सार्वंतर हमारा कितना आया 2. अब D बराबर 2 जो है समीकरण 1 में हम रखेंगे तो D इज इक्वल टू 2 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट. समीकरण 1 में मान रखने पर तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 19, A प्लस 5 टू 19, A plus 10 is equal to 19. So our A is 19 minus 10 is equal to 9. So we will find the value of A is 9. A का मान 9 और D का मान 2 प्राप्त होता है. So our 40th term of AP is equal to A plus 39D. Okay. Put the value of A 9 and D is 2. 78 plus 9 so 40th term is 87. Next question, question number 4 of 5.2. If third and ninth term of AP are 4 and A minus 8, थर्ड टर्म यानी तीसरा पद आपका है 4. सो A प्लस 2D इज इक्वल टू 4. इक्वेशन नंबर 1. एंड नाइन्थ टर्म नवा पद ऑफ AP इज माइनस 8. So A plus 8D is equal to minus 8. Equation number 2. We will use here elimination method. विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो A plus 2D 4, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम ऐसा कैसा ही है. बाय सब्ट्रैक्शन घटाने पर देखिए माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का इसलिए इसका साइन चेंज हो गया और काय का हो गया प्लस का. माइनस ए से माइनस कैंसिल, देखिए 8D माइनस का है और 2D काय का है प्लस का, तो आपके पास बचा -6.
ये प्लस का कितना हुआ 12, d इज इक्वल टू 12 माइनस 6, सो आवर d इज -2। अब समीकरण 1 में इस मान को रखेंगे, तो पुटिंग d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, so a plus 2 minus 2 is equal to 4, plus minus 2 to जा 4, बाई अल्ट्रेशन पक्षांतरण कर दीजिए, 4 और 4 कितना हो गया 8, तो प्रथम पद 8 और d आपका आया है -2, सारवंतर -2। एंड देन वी विल फाइंड विच टर्म विल बी 0, सो आवर a is equal to 8 and d is equal to -2, which term and question mark will be 0, an is equal to 0, so an is equal to a plus n minus 1 into d, an is equal to 0, 8 n minus 1 and -2 in bracket, -8 in divide, -2 -1 minus cancel 4, n minus 1 is equal to 4, so n is equal to 4 plus 1 is equal to 5, तो n is equal to 5, यानी कि पांचवा पद फिफ्थ टर्म विल बी 0 ऑफ दिस AP, इस AP का पांचवा पद जो है वो 0 होगा। Fifth question of 5.2, if third term of AP is 16, थर्ड टर्म तीसरा पद 16, यानी a plus 2d is equal to 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेवंथ टर्म इज 12 more than 15 according to question, सेवंथ टर्म यानी सातवां पद मोर देन फिफ्थ टर्म, सेवंथ टर्म मोर है फिफ्थ टर्म से, सो वी विल ऐड हियर फिफ्थ टर्म इन +12, देन दे आर इक्वल। सेवन टर्म इज a plus 6d, फिफ्थ टर्म इज a plus 4d plus 12, सातवां पद 12 ज़्यादा है पांचवें पद से, तो हमें बराबर का चिन्ह लगाना, तो ये 12 ज़्यादा है, तो अगर हम इसमें 12 जोड़ देते हैं तो सेवंथ टर्म जो है वो 15 टर्म प्लस 12 के क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो याद रखें ये मोर देन है, तो आपको इसमें प्लस करना पड़ेगा तभी बैलेंस होगा। बाय अल्टरेशन पक्षांतरण कर दीजिए, a minus 4d इज इक्वल टू 12, a से a कैंसिल, 6d minus 4d 2d इज इक्वल टू 12, सो d इज 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, यानी d आपका कॉमन डिफरेंस आता है 6। पुटिंग d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, d बराबर 6 समीकरण 1 में रखिए आप, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, d की वैल्यू पुट कीजिए, 6 दूनी 12, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, सो a इज इक्वल टू 4, सो वी विल फाइंड d इज इक्वल टू 6 एंड a इज इक्वल टू 4 ऑफ AP। We know that the formula of AP, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, so on. So a is equal to putting the value of a is 4 and d is 6. So our AP is 4,
4 plus 6, 4 plus 2 multiplied by 6, 4 plus 3 multiplied by 6 again. So 4, 10, 6 to 12, 12 plus 4, 16, 18 plus 4, 22. So our AP is 4, 10, 16, 22. Okay. Of question number 6 of 5.2, how many 3-digit numbers are divisible by 7? So 3-digit number is starting by 10, 100, 101, 102 and 999 is divisible by 7. It is divisible by 7? No. It is divisible by 7? No. 7 1 ja 7, 32? No. It is divisible? No. It is divisible by 7? No. It is divisible by 7? Yes. So, three digits numbers are 100, 101, 102 and last term is 999. 3 digits number are divisible by 7 are 105 and 112 up to last term is 999. No, because it is not divisible by 7. 998 it is not, 997 it is also not, 996 it is not, 995 it is not, 994 it is yes. So last term is 994. So our AP is 105, 112 and last term is 994. So A is equal to 105 and D is equal to A2 minus A1. 112 minus 105 is equal to 7. N is equal to question mark and last term is 994. So we will use the formula AN A plus N minus 1 into D. 994 105 plus N minus 1 D is 7. So 994 minus 105 and 7 is on divide. 994 minus 105 14 9 8 8 upon 7 N minus 1 1 2 9 is equal to N minus 1. So N is equal to 129 plus 1 N is equal to 130. 130. तो यहाँ पर 130 पद होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे और 3 नंबर के होंगे. तो यहाँ पर पूछ क्या रहा था वो देखो, 3 डिजिट के ऐसे नंबर्स जो 7 से डिवाइड हों. तो 100 से स्टार्ट होते हैं, 199 पे ख़त्म होते हैं. लेकिन 100 में 7 का भाग नहीं जाता, 101 में भी नहीं जाता, 102 में भी नहीं जाता, 103 में भी नहीं जाता, 104 में भी नहीं जाता, 105 में जाता है. तो 105 से स्टार्ट होगा, फिर 112 में जाएगा. अगर लास्ट देखें तो 999 में नहीं जाता है, 8 में नहीं, 98 998 में नहीं जाएगा, 997 में नहीं जाएगा, 996 में नहीं जाएगा, 995 में नहीं जाएगा, 994 में. तो लास्ट टर्म आपकी क्या हुई, 994. ओके. सो
three digit number divisible by 7 is are 130. Question number 7 of 5.2. Find the 11th term from last of AP 10, 7, 4. So AP is 10, 7, 4 minus 62. A is equal to 10. D is equal to A2 minus A1. 7 minus 10 is equal to minus 3. We will use the formula. It is AN is equal to minus 62. Nth term from last is equal to L minus N minus 1 into D. L is also known as AN. So minus 62 minus N minus 1 N is 11. 11 minus 1 into D. D is minus 3. So minus 62 minus plus 10 multiplied by 3. Minus 62 plus 30 is minus 32. So 11th term from last is equal to minus 32. Again see the formula. Next term from last L minus N minus 1 multiplied by D. Next question. Question number 8 of 5.2. Find the 12th term from the last of an AP. Given this, nth term of last formula L minus N minus 1 into D. So A is equal to 1, D is equal to A2 minus A1, 4 minus 1 is equal to 3, and N is equal to 12, and L or AN is equal to minus 88. Sorry, plus 88. So 12th term from last is equal to 88 minus 12 minus 1, D is 3. 88 minus 11 multiplied by 3. So 88 minus 33 is equal to 55. So 12th term from last is 55. We will solve the question number 9 of 5.2. There are 60 term in an AP. Its first term is 7. So first term A is 7 and last term. So last term is 60th term. So 16th term is 125. We know that 16th term A plus 50, 9D is equal to 125. Putting the value of A in equation first and find the value of D. A plus 59D is equal to 125. 7 plus 59D is equal to 125. 59D is equal to 125 minus 7. 118. So D is equal to 118 upon 59. It is 2. D is equal to 2. So A is equal to 7 and D is equal to 2. Find the 32th term. 32th term A plus 31D. Putting the value of A is 7 and D is 2. So 31 multiplied by 2, 62 plus 7, 69.
So 32th term is 69. We will solve question number 10 of 5.2. Four numbers are AP in AP. If sum of the number is 50 and largest number is 4 times then smaller one, then find the number. Let first 4 terms of AP. We know that first is A, second is A plus D, third is A plus 2D, and fourth is A plus 3D. Sum of number is 50. Sum of numbers is 50. So A plus D, A plus 2D, and A plus 3D is equal to 50. 1, 2, 3, 4. 4 times A and 1, 2, 3. 6 times D is equal to 50. Equation is divided by 2. 2A plus 3D is equal to 25. Equation number 5, by dividing by 2, largest number is 4 times the smaller one. Largest number is 4 times the smaller ones. So according to question, our larger number is A plus 3D and smaller is A. It is 4 times. So we multiply smaller by 4 and they are equal. It is 4 times. So multiplied by this by 4 and they are equal. By alteration, A plus 3D minus 4A is equal to 0. So minus 3A plus 3D is equal to 0. It is divided by 3. So minus A plus D is equal to 0. Dividing by 3. It is equation number second. We will use elimination method for finding the value of D and A. Equation number second multiplied by 2. So we will find 2A, 2D is equal to 0. Multiply by 2. By addition, जोड़ने पर 2 और 3 5D is equal to 25. So D is equal to 25 upon 5, that is D is equal to 5. Putting the value of D in equation number first. 2A plus 3, 5 is equal to 25. 2A is equal to 15. So 25 minus 15 is equal to 10. So A is equal to 10 upon 2 is equal to 5. A is equal to also 5. So 4 numbers of AP, A plus D, A plus 2D and A plus 3D. Putting the value of A and D, 5. 5 plus 5, 5 plus 2, 5.
and 5 plus 3 5. So